तो बेनिफिट ये होगा कि रादर देन मैं शॉप पे जाऊंगा, वहां देखूंगा, फिर मुझे पता नहीं होता वो मेरे घर पे कैसा लगेगा। बट वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फायदा क्या होगा कि मैं घर बैठे कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, आई एम एबल टू विजुअलाइज हंड्रेड्स ऑफ सोफा। मैं देख सकता हूँ मेरे घर के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सोफा फिट बैठ रहा है। वीआर क्या करता है कि आपका जो घर बनने वाला है वो बनने के पहले आप पूरा विजुअलाइज करते हो, कंप्लीटली गेटिंग इनटू दैट हाउस। जो बना ही नहीं है उसके अंदर आप विजुअलाइज करते हो, एंड देन यू गोइंग बैक टू योर इंटीरियर एंड से कि अरे इंटीरियर में मेरे को ये नहीं अच्छा लगा, यू चेंज दिस। बेडरूम में ना मेरे को ये स्पेस कम लग रही है, ये मेरे को ऐसा करके। कोविड हिट, सडनली व्हाट हैपेंड वाज लाइक फ्रॉम हियर टू AR VR got here, like suddenly the hype came up because all meetings were happening virtually. But still you want to show products to your customers, right? आप क्या करोगे, आप घर बैठे कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाओगे? हम लोग कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बट आप कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे घर पे दिखाओगे? आप घर पे नहीं जा सकते, कस्टमर आपके वहां पे नहीं आ सकता। So every industry, automobiles, healthcare, you talk about any industry, they all wanted to implement AR in इंडस्ट्री के अंदर। एक्चुअली में AR VR की जरूरत है, या जहां पे लग रहा है कस्टमर गोना यूज इट, वो कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग इट इन ए प्रॉपर वे। तो नंबर वन इंडस्ट्री इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। 80% ऑफ द ब्रांड्स आर यूजिंग AR राइट नाउ फॉर देयर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी का जब मार्केटिंग बजट डिसाइड होता है, as far as I understand, they are now keeping a budget for AR as well, कि हमें AR में करना है, because now people understand AR. So जब भी मार्केट स्लो डाउन होता है, जब लोगों को पता है नया बिजनेस नहीं आ रहा है, we have to work on existing one, तो सबसे पहले कंपनी कहाँ कट आउट करती है? मार्केटिंग बजट। AR इज द मोस्ट क्रुशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। अब मान के चलो कि अगर आपने मार्केटिंग बजट कट कर दिया है कि दैट वी आर नॉट गोना स्पेंड 100,000 दिस ईयर, वी आर ओनली गोना स्पेंड 20,000 or 30,000। ऑब्वियसली सिंस AR इज न्यू and that preference is not will going to be number one. Still now people are using traditional method, जहाँ पे आप बिलबोर्ड्स लगाते हो, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हो। सो मार्केटिंग में लोग ज्यादा वहां पे स्पेंड करेंगे लोकली ज्यादा जाने के लिए, एंड AR वाला जो बजट है वो लोग कट कर देंगे। वहां पे फिर हमें थोड़ा लगता है कि यार AR के कुछ नए कैंपेन्स हमें नहीं दिख रहे हैं, AR बहुत कम दिख रहा है, बिकॉज मार्केटिंग बजट ही कट हो गया है, तो AR तो कहाँ से अभी आएगा? जैसे ही मार्केट अप आएगा, जैसे ही वी सी दैट नाउ कंपनीज हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर, they will start investing into the AR and VR because they see the potential, उनको पता है potential। If you look at both of them individually like AR and AI, so both of them have already, they already have a good use cases, people are using it in a Yes. different way, but I'm more curious on combination of both of them, while combining both of them, what big use cases can be created out of that. Hi, welcome to the Digital Vigyaan podcast. Vigyaan is a Sanskrit term for science, and that's precisely what this podcast is all about, the science behind digital marketing. I'm your host, Dronacharya Dave, and I'm here to speak with experts from different domains of digital marketing as well as industry segments and learn their opinion on the ever changing landscape of digital marketing. Hello, everyone, and welcome to another exciting episode of Digital Vigyaan Podcast Season 2. For this episode, I decided to venture into the virtual world of AR and VR and see how these two technologies are impacting digital marketing campaigns. To help me navigate this virtual reality, I was joined by Shravan Rajpurohit. Shravan is a young entrepreneur who is the co-founder and CEO of The Intellify, a top-rated AR, VR, and enterprise mobility agency in India that provides custom solutions for metaverse, enterprise mobility, and other emerging technologies. He has over 8 years of experience in building and scaling digital businesses with a strong background in marketing, sales, and customer success. We discussed several aspects of AR VR technology, their use cases in real world, advantages with digital marketing campaigns, and what the future holds for them. Here's how the conversation unfolded. Hi, Shravan. Welcome to the Digital Vigyaan podcast. Thank you, thanks. Hi Dronacharya, how are you? I'm good. I'm good. Shravan, thanks first of all for agreeing to do this. Before we get into the serious stuff, for the sake of our listeners, if you can just give a short, introduction about yourself, your company, your background. Sure, 100%. So first of all, thank you so much, getting me on this podcast. It's really nice to, always share about, what we do, and specifically into the immersive technologies like AR and VR, what we do.
So it's always give me an pride to share about those technologies, what we have done so far, and how the market is getting involved in these technologies and what is the future of them. So yeah, really happy to share the kind of knowledge which I have gained so far, and if that benefits to your audience or anybody into the world. So yeah, so starting with a quick intro about like what we do, who I am right now. So I'm the CEO and co-founder of the company called The Intellify. We are a 5-year-old company. So we started back in 2018 with two of my partners. So I do have two of my partners. Right now, we got a team of 40 people in-house who do specifically, AR, VR, and enterprise mobility. And also our core expertise are like, we do augmented reality, we do virtual reality, like all the immersive stuff, as well as we do enterprise mobility as well. So we started obviously with the vision of doing something, out of the box. And that's how, we started with AR. Then eventually over the period of time, we get into the VR, and then धीरे धीरे थोड़ा enterprise mobility side भी गए, because that was the need of AR and VR as well. It's a combination of both. So that's how we started. Great, great. AR, VR is a field which I personally feel that, there was a time when this, entire wave of virtual reality Yeah, specifically was, booming around. Right? correct. And I'm talking about somewhere between 2014 to 20, and till up, recently up till 2021, I would say. Right. Hmm. However, since 2022, like not long back, right? And in fact, if I have to highlight a specific timeline, then since the emergence of generative AI technology, Correct. specifically ChatGPT, somehow the talk of the town, right? It has shifted from AR/VR technologies to generative AI and super intelligence, not just artificial intelligence, but super intelligence, right? But uh, it's still there, I mean, that's again, as I said, it's my personal point of view, what I see from what's happening in the industry. Hmm. um, it's still there. It's like, it's not like it's taken a, it's buried somewhere, or it's like not present anymore. Right. uh, but it has kind of lost that shine somehow because of generative AI coming into the picture, right? Do you also feel the same way? Do you think that AR VR technologies have taken a backseat and somehow not getting the approvals which they should? Do you Sure. feel the same? Yeah. So I'll start with how the trend has been in AR and VR. Then we'll slowly come to okay, abhi generative AI is more hyper, or why AR VR is getting setbacks. So what happened was AR and VR both are like pretty old technologies. From 2008, 9, 10 it started. And till 2018, when we started, it was still on a very kind of a newcomer into this world, right? Well, when we started, people were still like, "Arey, why are you doing AR? I mean, who's gonna use it? Do something mobile app, website, which is a long-lasting game. Everybody's doing that. Everybody have a customer on that. Customer wants that. Nobody wanted an AR into 2018, right? But still, we were also not sure, to be very honest, that whether it is going to make a long impact into this world or not. But somehow we wanted to give at least a 2 years of time. Okay, arre, chalo, at least we should give our 2 years of time, and then we see whether it is working or not. Rather than we just hear what people are saying and we just stop what we are doing right now. So when we started in 2018, for first 1 year, what we did was we were just doing demos, like छोटे छोटे demos, like because नया curiosity था. So what brands or startup used to come to us and say, अरे, this is our startup. Like for example, real estate. So they used to come to us and say, अरे हमको ना ये building ना AR में दिखाना है. Now they were not sure what is AR. So first of all, we try to consult with them what is AR, कैसे implement होगा, customer कैसे view करेगा, and उनका ROI क्या रहेगा. So that's how we started. But for entire year we did just small demos, छोटे छोटे demos हमने बनाए. Slowly, Yeah, can you just for the sake of our listeners, can you give a maybe a key difference or a short brief on what differentiates, what differs AR from VR, like augmented reality? Because I'm sure a lot of listeners, they might
they might think that both फर्क are क्या है fake. दोनों में? What is the difference between AR and VR? सो यू आर 100% राइट. सो इवन टिल नाउ ऑल्सो अभी ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है दैट ए कस्टमर कम्स टू अस एंड से कि मुझे वीआर बनाना है, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वी केम टू दैट ही एक्चुअली ही और शी डजंट वांटेड एन एआर, इट वाज एन वीआर. सो आई विल एक्सप्लेन एआर एंड वीआर इन अ वेरी सिंपल टर्म. तो एआर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड, राइट? नाउ मैं घर पे बैठा हूं एंड आई वांटेड टू ट्राई आउट द सोफाज. आई डोंट वांट टू स्टेप आउट फ्रॉम माय हाउस, तो मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, बट मुझे मेरे घर के लिए सोफास परचेस करने हैं. सो नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? सो फॉर एग्जांपल आई गो टू द IKEA's वेबसाइट और फ्लिपकार्ट वेबसाइट राइट नाउ. आई सी ऑल द सोफाज देयर. आई क्लिक ऑन देम, आई सी द डिटेल्स, एंड वहां पे मुझे एक ऑप्शन आता है ट्राई इन AR. अब उसमें क्या होता है, जब भी मैं ट्राई इन AR पे क्लिक करता हूं तो मेरा फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है? एंड जो सोफा मैंने सेलेक्ट किया है उसका 3D मॉडल मेरे रियल एनवायरमेंट में आ जाएगा. सो क्या हो रहा है, मेरा एनवायरमेंट रियल है, ठीक है, बट मेरे फोन के थ्रू आई एम एबल टू व्यू दैट वर्चुअल सोफा मेरे घर के अंदर. अब उससे क्या बेनिफिट होगा? तो बेनिफिट ये होगा कि रादर देन मैं शॉप पे जाऊंगा, वहां देखूंगा, फिर मुझे पता नहीं होता वो मेरे घर पे कैसा लगेगा. बट वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फायदा क्या होगा कि मैं घर बैठे कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, आई एम एबल टू विजुअलाइज हंड्रेड्स ऑफ सोफा. मैं देख सकता हूँ मेरे घर के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सोफा फिट बैठ रहा है, एंड दैट कम्स इन एग्जैक्ट मेजरमेंट. ऐसा नहीं है कि छोटा आएगा बड़ा आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स 3 by 3 फीट, राइट, तो वो 3 by 3 फीट का ही AR के अंदर आएगा. यू कैन जूम इन जूम आउट, मतलब आप उसको हिला सकते हो, यहाँ से वहां ले गए, आप लिविंग रूम में ले गए, कहीं पे भी ले जा सकते हो. सो दैट्स हाउ ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क्स. सो सिंपल टर्म ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ला रहे हो, दैट इज AR. सो वी आर ऑगमेंटिंग समथिंग इनटू द रियल वर्ल्ड, दैट इज AR, राइट? व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? सो वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई इंटीरियर डिजाइनर है, और हमने उनको कुछ काम दिया है कि दिस इज आई वांट टू कंस्ट्रक्ट माय हाउस, आप मुझे पूरा कुछ इंटीरियर का बना के दो. अब जनरली हम लोग विजुअलाइजेशन कैसा करते हैं कि दे सेंड यू सम 2D और 3D फाइल, और हम लोग कहीं पे देखते हैं, मोबाइल में देख लिया या लैपटॉप पे देख लिया, बट फिर भी वी वोंट बी एबल टू विजुअलाइज दैट कि यार यार कैसा दिखेगा एग्जैक्टली. सो देन VR कम्स इनटू द पिक्चर. तो VR क्या करता है कि आपका जो घर बनने वाला है वो बनने के पहले आप पूरा विजुअलाइज करते हो, कंप्लीटली गेटिंग इनटू दैट हाउस. जो बना ही नहीं है उसके अंदर आप विजुअलाइज कर रहे हो. तो आपने जैसे हेडसेट पहना, यू आर कंप्लीटली इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड, आपके अराउंड कोई भी रियल वर्ल्ड नहीं है. सो आपके जो भी दो टू बेडरूम हॉल किचन का आप जो भी घर बना रहे हो, राइट, नाउ यू आर एबल टू फील दैट, यू आर एबल टू विजुअलाइज इट. आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, वॉक अराउंड कर रहे हो, आप देख रहे हो आपका लिविंग रूम कैसा लग रहा है, विच इज एवरीथिंग वर्चुअल. एंड देन यू गोइंग बैक टू योर इंटीरियर एंड से कि अरे इंटीरियर में मेरे को ये नहीं अच्छा लगा, यू चेंज दिस. बेडरूम में ना मेरे को ये स्पेस कम लग रही है, ये मेरे को ऐसा करके दो. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ VR वेयर यू आर गेटिंग कंप्लीटली इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड. So सो basically, in AR, you are bringing the product or that space into the real world, yeah, and yeah, and in VR, you are going yourself. You are going into the virtual world. transporting, exactly. So ये दो differences, like these are very simple example I would say, because real estate या ये generally काफी common examples है. So right now Flipkart की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे भी, like any users who goes to the Flipkart वेबसाइट, अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो, अगर आप सोफा या फर्नीचर की कैटेगरी में हो ना, यू विल ऑलवेज गेट एन ऑप्शन ऑफ AR इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऐसा. Of course, AR VR has been there, and in terms of industry applications, as far as I understand, some of the most highly acting industries include gaming industry. Right. Then you have agriculture. Then you have the healthcare industry. But like, do you see? Like, of course, you gave an example, a very good example of real estate as well. So, like, are you suggesting that going forward, this will be the way of for any industry to reach out to their audience for marketing purposes? So I'll go back to your previous question, जहाँ पे you asked about whether the AR/VR is setback, and we'll come back to this question, that how this Yeah, is going to implemented, right? because yeah, yes, These two will be connected. So yes, going back to whether the AR/VR has setback or not. So जब 2019 में जब हम लोग डेमोस बना रहे थे, that the COVID hit, right? 2019 के yeah. अंदर, I think 2020 में COVID hit. So So 2019 November, it started in China.
And And then by the time it got global recognition, it was 2020, somewhere January, February. एग्जैक्टली सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट हाउ AR VR गॉट हाइप्ड लाइक मेन स्ट्रीम कैसे बना. सो व्हेन कोविड हिट एवरीबडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम राइट. कोई बाहर नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर आल्सो नॉट रेडी. लाइक हम लोग हार्डली 5-7 लोगों की टीम थे. लाइक वी जस्ट स्टार्टेड राइट. एक साल ही हुआ था, 1-1.5 साल हुआ था. वी वर स्टिल डूइंग डेमोज. वी वर आल्सो नॉट श्योर कि विच इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू गेट मोर इनसाइट उस टाइम पे. ठीक है, लाइक रियल एस्टेट वन ऑफ देम वाज. फिर एजुकेशन में थोड़ा बहुत चल रहा था, बट नॉट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेर यूजिंग इट. But when COVID hit, suddenly what happened was like from here to AR/VR got here. Like, suddenly the hype came up because all meetings were happening virtually. But still you want to show products to your customers, right? आप क्या करोगे? आप घर बैठे कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाओगे? हम लोग कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बट आप कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे घर पे दिखाओगे? आप घर पे नहीं जा सकते, कस्टमर आपके वहां पे नहीं आ सकता. So every industry, automobiles, healthcare, you talk about any industry, they all wanted to implement AR and VR, as well as they wanted to create the virtual meetings as well. जहाँ पे आप वर्चुअली उनका एक एनवायरनमेंट बनाया है, आप वहां पे जा रहे हो, आपका अवतार है, यू आर डिस्कसिंग ऑल्सो एक मेटावर्स क्रिएट कर दिया. काइंड ऑफ राइट. सो यू वोंट बिलीव दैट एंटायर 1 year ऑफ कोविड जो लाइक फर्स्ट वेव सेकंड वेव जो हमारे यहाँ पे चला था, that was like and jabardast wala cheese for AR and VR. Every brand wanted to, like, you won't believe, we got more than 100 plus brands inquiries जहाँ पे they all wanted to implement AR and VR. ठीक है. अब ये देख के ऐसा लग रहा है कि यार वाओ, AR is going to be one of the most used technology into the world. The But one of the most emerging technologies. एग्जैक्टली. बट फिर क्या हुआ, 1-1.5 साल 2 साल के बाद एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल. सब लोग बाहर जाने लगे, ऑफिस जाने लगे, तो Yeah. वर्चुअल मीटिंग्स खत्म हो गए. ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा चला गया. सेकंड आया प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन. तो पहले तो क्या था, 100% कंपनीज हाईली डिपेंडेंट थी कि यार हमको तो वर्चुअली दिखाना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे. बट अब क्या हो गया था, मिक्स हो गया था कि कस्टमर आ भी रहे और नहीं भी आ रहे हैं. नहीं भी यार. वहां पे आधा सेगमेंट खत्म हो गया. सो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि एक जो हाइप बना था पूरा AR एंड VR का, वो एक स्टेगनेंट हो गया. अब स्टेगनेंट कैसे हुआ कि जिस इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली में AR/VR की जरूरत है, या जहां पे लग रहा है कस्टमर गोना यूज इट, वो कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग इट इन ए प्रॉपर वे. तो नंबर वन इंडस्ट्री इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. दैट इज नंबर वन इंडस्ट्री. क्यों? Okay. क्योंकि कोई भी ब्रांड आप पकड़ लो, वेदर इट्स एन ऑटोमोबाइल ब्रांड और वेदर इट्स एन हेल्थ केयर, सारी कंपनीज को ब्रांडिंग करना है, राइट. एंड AR बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टूल राइट नाउ टू यूज इट एज एन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बॉटल है, आप कुछ कोला या कुछ भी आप बेच रहे हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हो. नाउ यू वांट टू गेट यूजर्स टू इंटरेक्ट विद दोस बॉटल्स. लाइक फॉर एग्जांपल, आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं या कुछ भी होता है, तो जनरल पहले केस क्या था कि आप QR कोड स्कैन करो, फिर आप स्क्रैच करो, फिर आपको कुछ मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग था. With the help of AR, you can give a message to the user as well. You can ask them to play the game also. So उससे क्या होगा, ब्रांड का रिकॉग्निशन ज्यादा होगा, ब्रांड की मेमोरी बढ़ती जाएगी लोगों के पास कि अरे मैंने ये स्कैन किया ना, तो मुझे ये लॉयल्टी पॉइंट्स मिली या मुझे ये गिफ्ट मिला, तू भी ट्राई कर. सो दैट वर्ड ऑफ माउथ थिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जितने भी ब्रांड्स थे, दे ऑल राइट नाउ, इफ आई टॉक अबाउट, ऑल द ब्रांड्स आर यूजिंग स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और कस्टम वेब AR हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपको मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं है. यू जस्ट स्कैन द QR कोड और फिर आप मार्कर स्कैन करो और वहां पे आ जाता है. सो एज फार एज आई रिमेंबर, 80% ऑफ द ब्रांड्स आर यूजिंग AR राइट नाउ फॉर देयर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग. तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी का जब मार्केटिंग बजट डिसाइड होता है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, दे आर नाउ कीपिंग ए बजट फॉर AR एज वेल, कि हमें AR में करना है, बिकॉज नाउ पीपल अंडरस्टैंड AR. जनरली मैं अगर हमारे ऑडियंस की भी बात करूं, जैसे हमारी जो भी ऑडियंस अभी देख रही होगी या जो भी देखेगी, दे ऑल माइट बी यूजिंग AR, बट उनको पता नहीं कि वो लोग AR यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम फिल्टर हमारे फेस पे कुछ आ गया, या हम लोग उसके साथ गेम्स खेल रहे हैं, सो दैट ऑल इज AR, बट लोगों को नहीं पता है कि वो लोग AR यूज कर रहे हैं अभी. So that's how AR has already implemented into people's life, but most of the people are not aware about them. Right. Yeah, that's a great point. Because this is very true. People actually don't even realize that they are actually already engaging with AI technology. In Correct. some ways. Correct. And on the daily routine,
बिकॉज इंस्टाग्राम तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले लोग आंख खोलने के बाद फोन ही खोलते हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। और दैट्स हैपनिंग। उसमें क्या हुआ कि जैसे व्हेन ब्रांड स्टार्टेड यूजिंग एआर, राइट, सो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड गेटिंग एंगेज विद इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। तो अब मान के चलो, अगर एक इन्फ्लुएंसर अगर कोई भी एक फिल्टर यूज कर रहा है, मान के चलो कोई भी ब्रांड का है, अगर उन्होंने यूज किया तो डेफिनेटली उनके जो फॉलोवर्स है दे आर डेफिनेटली गोना यूज इट एटलीस्ट वंस। एब्सोल्युटली। ऑटोमेटिकली उनके जो भी कनेक्ट्स होंगे वो देखेंगे, लाइक दैट्स ए काइंड ऑफ, नहीं वो मार्केटिंग वाला जो गेम है, आप तीन बनाओ उनके अंदर तीन जने और बनाओ, ओ, काइंड ऑफ। एमएलएम हाँ, वाला, मल्टी काइंड ऑफ, लेवल मार्केटिंग। एग्जैक्टली। तो वो वाला हुआ, तो एआर में एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वाला ज्यादा चला। एंड आप जो बोल रहे हो, लाइक इफ इट हैज सेटबैक, तो आई वुड नॉट से इट हैज सेटबैक, बट प्रॉपरली एक एडजस्ट हो गया है कि एआर कहाँ यूज होगा, वीआर कहाँ यूज होगा। पहले तो क्या हुआ था, एक सम से बहुत हाइप आ गया था कि अरे सबको यूज करना है। बट जब सबने यूज किया, सो दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट समथिंग फॉर अस, एंड समवन रियलाइज दैट दिस इज फॉर अस ओनली, काइंड ऑफ वाली चीज हो गई। So एंड is it safe to say that both AR and VR, they have found their niche in different industry applications? Like for example, when I say that, I mean AR जो है वो B2B सेगमेंट के लिए हो गया है, VR जो है वो B2C सेगमेंट के लिए ज्यादा हो गया है। Is it a correct assessment? या आई is it balanced in the two? इट्स बैलेंस बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि एआर में और वीआर में दोनों भी ऐसा ही है। लाइक वीआर कैसा है कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ ए पर्टिकुलर वीआर डिवाइस, तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई ऑफिशियली कोई वेंडर ही अवेलेबल नहीं है जो आपको ऑफिशियली डिवाइस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूलस की बात करूँ जो हेडसेट है, राइट, तो दैट्स नॉट अवेलेबल ऑफिशियली इन इंडिया। अभी अभी हमारा इतना बड़ा मार्केट है, बट स्टिल इट्स नॉट ऑफिशियली अवेलेबल। So for example, if I want to buy the Oculus device, I have to buy it from USA or Dubai और कहीं पे भी मेरे को वहां जाके buy करना पड़ता है. Then I have to get it here. So that kind of thing is happening. So अभी यूजर्स के पास दो चीजें नहीं है। एक तो पहले तो वीआर डिवाइस इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द वीआर डिवाइसेस। जैसे जियो ग्लास भी लॉन्च हुआ है, दैट इज वन ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल। सेकेंडली द प्राइस पॉइंट। अब जैसे एक ऑक्यूलस क्वेस्ट की मैं बात करूँ तो वो $399 $499 का आता है। सो वहीं पे आधी ऑडियंस तो वहीं कट हो जाती है कि अरे यार, आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन दिस, आई विल प्ले Yeah. द गेम इन मोबाइल ओनली। तो वो अभी प्राइसिंग पॉइंट एक हमारा मैच नहीं हुआ है, प्लस द डिवाइस आल्सो इज नॉट अवेलेबल। एंड वीआर कैसा हो गया कि हमारे केस में इंडिया की बात करूं तो मोस्टली इट्स मोर ऑन द इवेंट एग्जीबिशन में ज्यादा यूज होता है। कि फॉर एग्जांपल आपका एक स्टॉल लगा है एंड यू आर शोकेसिंग सम न्यू लाइंस ऑफ मशीनरी, या आपके पास कुछ नया प्रोडक्ट है जो आपने अभी बनाया नहीं है बट इट्स इन कॉन्सेप्ट स्टेज, तो आप वो यूजर्स को वीआर में बता रहे हो, दैट इज वन यूज केस। सेकेंड मोस्टली यूज हो रहा है ट्रेनिंग में, ऑन बोर्डिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, राइट, एंड यू हैव बिग मशीनरीज, तो rather than taking that particular new person directly to the machinery, what you do is you give them a virtual training जहां पे आप उनके KPIs वगैरह सब मेजर करते हो whether he is efficient or not, and once you get all of those score, because आजकल तो बैकएंड में आपको पूरा डेटा मिल जाता है, एनालिटिक्स मिल जाता है, राइट, so based on that then you take that person to the next level which is the actual machinery। तो डिफरेंट वे में डिफरेंट जगह पे AR एंड VR यूज हो रहा है। सो आज भी यूजर्स हर जगह पे है एआर और वीआर का, बट उनके सेटबैक इंडस्ट्रीज हो गए कि ओके, मेजरली एआर यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, वीआर यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है। एंड मेन थिंग है आरओआई, कि जब तक कोई कंपनी को उनका आरओआई नहीं मिलेगा वो डेफिनेटली वो वापस वो चीज को यूज नहीं करेंगे। तो जिस कंपनीज को आरओआई मिला उन्होंने वापस रिपीटेडली यूज किया, जिनको नहीं मिला दे दे गेट इनटू द मार्केट और उन्होंने कुछ नया ढूंढना चालू किया, जैसे जनरेटिव एआई हो गया या चैटबॉट हो गया या कुछ भी हो गया, डिजिटल ट्विन हो गया। सो फर्दर जैसे जैसे कंपनीज का कहीं ना कहीं एक सेटबैक होता जाता है और वो लोग वहीं पे वो फिर वो चीज स्टिक हो जाते So you just mentioned the term digital twin. हैं। Does that falls under the same category with AR VR, or is it something different? सो आई वुड से, सो ए आर वी आर में कैसा है कि ए आर वी आर कैन बी स्टैटिक ऑल्सो। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है सोफा का फॉर एग्जाम्पल, और आपके डेमो के लिए आपने बनाया, आपके 10 प्रोडक्ट है, आपने बना के एआर में दिखा दिया। यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एनालिटिक्स या रियल टाइम डेटा इन दैट, आपको उसमें कुछ जरूरत नहीं है, तो आपने बना के रख दिया। डेटा चाहिए तो भी पॉसिबल है, सो दिस टू थिंग्स आर पॉसिबल। डिजिटल ट्विन हम लोग कहाँ यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है, अहमदाबाद सिटी की बात करूं मैं, तो अहमदाबाद सिटी का आपने एक डिजिटल ट्विन बना लिया। अब क्यों बनाते हैं? ताकि हमें एक रियल टाइम डेटा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हवा है, पानी है, या जो भी है, जो भी मेजरमेंट्स है। तो डिजिटल ट्विन मोस्टली वहां पे एनालिटिक्स के लिए ज्यादा यूज होता है।
जहाँ पे रियल टाइम में फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्विन में आप इम्पैक्ट करके देखते हो कि अगर हवामान इतना बढ़ गया है, अगर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा सिटी पे। सो मोस्टली डिजिटल ट्विन वहां पे ज्यादा यूज होता है। वी हैवेंट वर्कड ऑन दैट, बट ये मेरा हाई लेवल का नॉलेज है डिजिटल ट्विन के रिलेटेड। सो मोस्टली डिजिटल ट्विन यूज होता है डेटा रिलेटेड, जहाँ पे आपको डेटा बहुत चाहिए, रियल टाइम डेटा चाहिए। सो आपके पास 3D मॉडल है और 3D मॉडल से आप एक्चुअल डेटा निकाल रहे हो, तो वहां पे डिजिटल ट्विन ज्यादा यूज होता है। AR VR का मैंने आपको जो यूज केस बताया, दैट इज मोर यूज्ड ऑन दैट लेवल्स। So, and as of now, I don't think the concept of digital twin has emerged at that level, especially in India. If I talk about या कॉन्सेप्ट स्टेज अभी काइंड ऑफ to स्टेज पे what ज्यादा है। AR VR has taken, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। and I think it requires a more stricter and more expansive infrastructure to तो execute. डिजिटल ट्विन यूज करने वाले कौन होंगे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग? सो गवर्नमेंट्स, Governments, बिग yes. ऑर्गेनाइजेशन। सो वो लोग क्या करेंगे, बिकॉज दे नीड सम एनालिटिक्स, फ्यूचर फोरकास्ट। सो उन सब में आई थिंक डिजिटल ट्विन ज्यादा यूज होगा। इट्स ऑब्वियसली, Disaster management के लिए. yeah, it's good. It's really helpful also, but the implementation has to be in a right way. Otherwise, it can fail everything. No, absolutely. I feel that with AR, VR, it's right now, it's as if, it's hiding somewhere in the bushes, waiting for its opportunity to bounce back and capture the entire, all sorts of market segments and capture the limelight that it was actually having some couple of years back. Because I remember there was a lot of talk going around about NFTs and people spending in NFTs, your blockchain technology, and suddenly all these things, the discussions around all these things just vanished, sort of. If you have noticed from past 1 year, the market has slowed down, right? एक साल से अगर आप देखोगे तो market has completely slowed down. And over the period like अभी next 2-4 महीने 6 महीने will still it will slow down. तो जब market slow down होता है, तो कोई भी ब्रांड होता है, राइट? I'll give you just a simple fact like कैसे चीजें वर्क करती है। बट ऑब्वियसली आप जब AR और VR एप्लीकेशन बनाते हो, यू नीड सम बजट, वहां पे काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड्स वांट टू मेक श्योर कि जब भी वो कुछ AR VR डिजाइन कर रहे हैं, इट गिव्स देम इमर्सिव एक्सपीरियंस कस्टमर को, एज वेल एज एवरीथिंग इज बजट अलाइन्ड। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। So, according to you, what what role does AR VR plays for digital marketing, or how crucial or important it is today, or and even going forward in future? We'll talk about also. We'll touch base on that also. But what is your take on the importance of AR and VR in digital marketing? Because yes, as I said earlier, generative AI is taking all the gala right now. Right. Being the talk of the town for digital marketers. But I'm of the opinion that AR VR has a very crucial role to play. I want to know your point of view and So why. So what happened is हम लोग as in company we work with two types of segments, right? One is we work with direct customers, ठीक है? And second is we work with agencies. Now who are those agencies? Those agencies are digital marketing agencies, ठीक है? अब 50% of the time, or I would say 40% of the time, we work with digital marketing agencies, and 60% we work directly with the customers. Now our customers can be a brand, a direct brand, a startup, or a mid-scale company. Okay? That is one option. And when we work with any of the digital marketing agencies, most of the agencies have brands. उन सबके पास brands है, ठीक है? अब when I say 40%, so now you can imagine how the number of agencies we would be working with. So if I talk about India, we work with leading agencies in India. We work in a couple of good agencies in US. We work a couple of good agencies in Dubai. So similar way in 5 to 7 countries, we work with a lot of agencies, and they all are digital marketing agencies. They always have come up with AR ideas because they feel that AR is a crucial thing. I mean, brands are gonna love it, brands wants to implement it, and definitely is going to give them the ROI. So all of these agencies always come to us with the requirement that, hey, for example, XYZ brand is there, we want to implement this, we want to implement that, we want to implement this. So that's how
as a company, we started feeling that, hey, brands are loving it because digital marketing agencies are pushing themselves to build AR and VR solution for the brands. बिकॉज क्या होता है कि एजेंसीज हमारी जैसी कंपनीज का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इतना ब्रांड्स के साथ कम रहता है. एजेंसीज ऑलवेज हैव ए ब्रांड्स की एजेंसी नंबर वन है तो उनके पास ऑलरेडी 5 ब्रांड्स फिक्स है. एंड नाउ दे फील एआर इज ऑल्सो क्रुशियल तो वो लोग एआर भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं. एंड फॉर दैट दे नीड ए वेंडर लाइक अस. तो हम लोग क्या सो करते हैं. वो एक एजेंसी के पास ऑलरेडी 10 ब्रांड्स हैं. सो इफ यू हैव 40% ऑफ योर कस्टमर्स एज एजेंसीज, वो एनीवे मल्टीप्लाई हो रहा है. एग्जैक्टली तो उससे हमारा क्या हो गया कि वी ऑलरेडी नो कि एक एजेंसी के पास 10 ब्रांड्स है. एंड अगर हम उनको कुछ बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी कैन डू, so definitely they can go back and tell all of those 10 brands के we can do this, we can do this, because brands are gonna listen to them. एजेंसीज को तो लिसन करेंगे बिकॉज पूरा मार्केटिंग गेम ही उन पर डिपेंडेंट है, राइट. So that's how we collaborate, and that's why we feel that digital marketing के अंदर AR and VR is very crucial because it's has become a integral part of that. जैसे मान के चलो अगर कोई ब्रांड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या एग्जिबिट कर रही है तो वहां पे भी तो मेन रोल किसका प्ले करेगा, एजेंसीज का. एजेंसीज विल डिजाइन फ्लायर्स, उनका पूरा स्टॉल बनाएंगे, वहां पे स्टॉल में क्या क्या करना है वो डिजाइन करेंगे. एंड उसके अंदर फिर AR और VR दोनों आ गया. दैट वो लोग ब्रांड को बोलेंगे अच्छा आप स्टॉल बना रहे हो, ठीक है, एक काम करो आप AR और VR दोनों इंप्लीमेंट करो. उससे क्या होगा, जब भी कस्टमर आपके पास आएगा एंड वो AR और VR देखा, ही विल गेट वाव, and then he will bring 5 more customers to your stall. या तो you will become a center of attraction because AR and VR still is an immersive game जहाँ पे लोगों को देख के मजा आ रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ फील आ रहा है. So that's how agencies are pushing brands to use AR and VR. Connecting the dots again back to our very first question, right? Um, where do you think, or when do you think this the wave of AR VR is actually going to bounce back? Because it is going to. That's my thinking. AR VR is anyways, it has revolutionized the way we perceive services and products, right? So, and one would think, what can be more than this? You're creating an entire virtual world, or you're creating an entire augmentation of products and services that you can. But I'm sure there is more to that. So, where do you see this technology going? Blockchain, NFTs, all have come and they have taken a backseat as of now. What's next for AR VR? So for AR VR, as far as I see right now, so obviously, as you mentioned right now, it's in a stagnant position where, it's not even increasing or not even going very down right now. Now, when it will bounce back, so there are two ways. One, once the market starts getting up, because right now the market is pretty down, right? So once we see that, the market is getting up, then definitely, a new requirements on AR and VR will come. That is one way. That's an organic way of, growing the AR and VR market. Second way, which we as in company or companies like us definitely must be doing this, where what we are doing is we have been through the whole journey of AR and VR in last 5 years, right? Up, down, multiple things, multiple phases happen. So right now, as in company, we know what works and what doesn't work for the brands or any of the companies. So what we are doing is, as in company, we are trying to create the use cases. For example, healthcare, manufacturing, education, any industry you take. So we know that these are the top 5 industries where we see AR and VR is working. It's generating ROI, and definitely people are gonna use it for the over the period of time and for a long time. So what we are doing is now we are creating different use cases which can be implemented into those industries, as well as it can generate ROIs for their customers, for the brand's customers, and they can give them a long-term return on that. So earlier AR VR was more of like in demo purposes, एक बार आपने implement कर दिया, देखो चलेगा नहीं चलेगा. So that phase is completely over, and that's why we see a setback right now. But now what will happen is whatever solution companies like us, I would not say we are the only company, but a lot of companies like us are there who are preparing, use cases, who have already prepared and started implementing also. काफी सारी companies they are already implementing it. One of the real example which I'm giving you, which most of the industries are using it, that's called remote troubleshooting. So you get into the problem,
You get into the call with the technician and he helps you out with this. So it's a remote collaboration which is happening. This is one of the use case which is already implemented. So धीरे धीरे क्या होगा, companies like us will get more into this kind of use cases, start reaching out to the customers, because now we know that definitely this customer needs it. They just don't know, but they need it. This is going to change it, like the way they work. And then they will use it, they will implement it, they will get more customers, more traction. And that's how AR and VR use cases are going to, find their own ways of in different industries. So this is way we are going to handle it in next coming years. So, in like if you put this in the inbound marketing perspective, so the AR/VR technology is now going to move from top of the funnel applications to middle of the funnel, and then eventually sooner or later they'll be going into the bottom of the funnel, wherein Exactly. they're going to provide not just the use cases as you mentioned to convert them, but also provide all the after sales services, as we say, to retain the customers and Correct. keep them engaged. Correct. And also the kind of way I'm seeing things going right now, I think AR VR merging actually with generative AI, and brands using that, leveraging the benefit of So it their has already customers. implemented. It has already implemented. So right now there is a concept of web AI, right? So what Mm. you can do is, for example, you start the application, you get into the camera, and you, for example, you point towards the sky and you write that, paint the sky color with red. So within a fraction of second, it paints the sky color with red. So it's an implementation of AR and generative AI. And A lot generative of AI. companies are already started implementing it. But I'm 100% not sure on, how that is going to be a long-term product, I would say, combination of both of them, and how it is going to be more useful, because obviously both of them separately have a good use case, right? For example, Photoshop, or maybe, any Adobe, all these big companies have So already started using it. I think this is going to play a big role in like one of the applications that I can, as of now, I can think of and Hmm. point out is that of voice search, Hmm. because voice search is something like we've had chatbots, Correct. but voice search is something which is scaling up a Correct. lot Hmm. lately. I feel that this is going to happen because the use of AI, you know, uh, implementing club that for implementing voice search outputs for better search experience, for better user experience, something that I strongly feel that brands are going to into, because I guess uh, Microsoft is of already has started doing something on that. They've Right. not actually come out with it, but so yeah, I mean that's So what that's what I'm saying. If you look at both of them individually, like AR and AI, so both of them have, they already have a good use cases. People are using it in a yes. different way. But I'm more curious on, combination of both of them. While combining both of them, what big use cases can be created out of that? So the same way, like, we have good use cases in AR, like, you can try on the virtual furnitures. Companies like Flipkart, Amazon, Pepperfry, all of them have implemented. So that's a very big use case now. Similarly, in VR also, a lot of machineries, demonstration, a lot of companies are using it for training. So that's again a very big use case. So what I am as in company is more curious about is, what will be the combination of both? Maybe we'll do something, some other company will do it, but more on that side, what is next in that? Yeah. We'll wait and see how things turn up with these Exactly. two things coming together. Just one last thing, Shravan, Yeah. before we this up. So you know that with when it comes to AI, while it is actually coming in and integrating its role with a lot of applications, there is a certain section which also feels that too much of AI or too much of freedom given to AI can actually turn out to be kind of detrimental and kind bit of risky as well for
for the humanity, right? Yeah. Per se. Do you feel the same thing goes for AR VR technology? Uh, so what happens is with AR and VR, we are still controlling it. So when I say controlling it, we know that what is going in AR and what is going in VR. For example, if Flipkart has implemented AR right now, they know that there are 10,000 products which has an AR function, and those are the only 10,000 which people are going to use it, right? There is no hidden thing, or there is no, until and unless there is malfunction happen or any viruses comes in, that's a different story. But if you look at it the other way, these are 10,000 products. We have implemented the AR. People are going to use it. People are going to feedback us. That's it. Similar way with the virtual, because we are designing everything, we are implementing everything, and we are controlling everything. Now, coming back to the AI. So, what is AI? AI is where you ask question, they give you some generative answers, and they are trying to learn from you as well. So it's a combination of both. They are giving you answer also, as well as they are learning from you also. So we are not sure, what they are learning from you. So there are some good things which are learning, but are we really sure that they are not learning the bad things? Or most of the time, when I go, for example, on a chat GPT or any of the this AI tool, and when I type any of the questions, most of the time people what they do is they just copy paste it on LinkedIn, and that's it. But they don't read it, that is it actually true what ChatGPT is saying? Is it actually necessary for the post which I'm doing right now on LinkedIn? So this is the problem I've seen. I mean, most of the LinkedIn posts which I see right now, 50% of the post I can clearly identify these all are ChatGPT posts. Exciting times for this, exciting news for this. You can clearly identify. Absolutely, So, absolutely. the human threat is people are now blindly, trusting this tool. I'm not saying we don't trust them, but we have to use our intelligence as well. So whether It has to be modified. It has to be exactly, modified exactly. in terms of the way that your audience could understand. Exactly. Even I also And use ChatGPT. I also use multiple AI tools. I go there, I type question, I get answers, but I don't just copy paste it. I just use 20, 30, or 40% of what content they've given me. Rest I modify it, I put my own words, and then I post it on LinkedIn. So that has to be the way of using, this AI I tool. think that's where AI differs from the applications of AR and VR, because with AR VR we are actually, it's us, the developers, who are actually setting the rules that, okay, this is the limit, this is how it's going to use, this is how it's going to be, give the facilities and 100%, 100%. everything. So that's my perspective. Great. Again, it can be different for another, I mean, any other person, but that's what I feel. I mean, this is has to be the right way of using AI, not blindly trusting it. Definitely, you should use it because it's giving you the data for which you don't have to research it, right? You go on Google, you research it, you find out five And articles. see, technology, yeah, yeah, and see, technologies are meant to, transform, right? They're meant to evolve. You have to evolve with Exactly. time using those technologies. You cannot go away with that. Exactly. But it's then it all boils down to how you are actually using Yeah. and for Right. what. Right. 100%. Great. I'm sure the listeners might have got a lot of new perspective around what AR and VR technologies actually are, right? No. And how they are, getting utilized, or what their role is actually. 100%. So, thank you so much for inviting me to this podcast. I mean, you know, most of the time I don't get this much amount of time to share my experience or what I feel about AR and VR, because definitely I'm very connected to the AR and VR, right? Yeah. So whenever I get such chances, I if you have noticed, my answers were pretty long. So first of all, I'm very sorry that if the which audience. shows which shows you have a lot to share about this. Exactly. So that's how I feel, and the maximum knowledge basically I have, I can share it with the people. Even if your audience wanted to know more, they can just comment down in your YouTube channel, wherever it is, right? They can just comment down their questions, and if I'm there, I'll be happy to answer those questions as well. That's really nice. That's really great. Thanks again, Shravan, and hope to see you soon. Thank you for tuning in. If you like the podcast, please do subscribe to my channel on Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and Google Podcast.